हेलो दोस्तों, हमारे इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। सो टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम डिस्कसिंग योर चैप्टर वाइज वेटेज बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई वांट टू शेयर विथ यू रिगार्डिंग द नीट 2023 का डेट बिकॉज आई नो इट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी एंशियस टू नो. So a lot of students have been messaging and there has been a lot of debate regarding this one article which has come out from Times Now जो प्रेडिक्ट कर रहा है कि नीट 2023 का एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो सकता है जो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे थे. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट एनएमसी ने अभी एक MBBS करिकुलम का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ किया है. मतलब आपके पहले वाले जो बैच है, मतलब द पीपल हु गॉट थ्रू नीट 2022 एंड टुक एडमिशन इन MBBS इन 2022, उन लोगों का जो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक कैलेंडर है दैट वाज रिलीज्ड अ फ्यू डेज आफ्टर द नीट UG नोटिफिकेशन वाज गिवन. एंड अकॉर्डिंग टू दैट MBBS का फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला है December 15th of 2023. So even though NTA had suggested it will be conducted in the month of May as per usual, कुछ देर बाद थोड़ा सा contradictory evidence निकला था. So as you can see on the screen, I have written that. So since the first year will be ending on the 15th of December 2023, so obviously हम उससे पहले तो हम दूसरे बैच को एडमिशन नहीं ले सकते, राइट? बिकॉज वी कांट हैव 2 years वन इन द सेम ईयर. जैसे कि एक क्लास जाता है, ऊपर जाता है, उसके बाद ही तो नया एडमिशन आता है, राइट? सो इन द सेम वे, until and unless the first year, current first years are getting their promotion into second year, at least when they are close to their promotion into second year, it will be difficult to admit a new batch due to lack of infrastructure and lack of space and etc., right? So that is the thinking that behind which we are thinking that इस साल का एग्ज़ाम थोड़ा postpone हो सकता है. But on this slide, I would like to draw your attention to one particular word, that with the first year of this year's batch completing in December of 2023, it can be presumed that starting the new batch of MBBS before the end of November might be a bit of a challenge. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बोला 2 मिनट पहले कि इन द सेंस कि अगर 2 क्लास एक साथ एक ही साल में नहीं रह सकते, तो until and unless करंट साल का एटलीस्ट क्लोज टू कंप्लीशन नहीं आ जाता, इट विल बी डिफिकल्ट टू एडमिट अ न्यू बैच. सो वी आर प्रिज्यूमिंग दिस. आई हैव रेड सर्कल्ड द वर्ड प्रिज्यूम्ड इन द सेंस कि ये अभी कंफर्म नहीं है, बट वी आर जस्ट प्रिज्यूमिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन सेंस एंड मैथ्स एंड जो हम समझते हैं ऑफ द ट्रेंड्स as far as it has been in the previous years. So now as we know that COVID के पैंडेमिक के कारण से हमारे एकेडमिक स्केड्यूल एंड एकेडमिक कैलेंडर का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, एंड इट्स ट्रू फॉर स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल एंड एट ऑल लेवल्स. सो व्हाट वाज इट बिफोर कोविड? बिकॉज यू शुड नो द नॉर्मल बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अबनॉर्मल, राइट? सो नॉर्मल शेड्यूल बिफोर कोविड वाज दैट MBBS का फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्जाम्स रहता था वो अगस्त सितंबर में होता था. तो इसलिए उनके बाद वाले जो बैच, मतलब नया जो बैच था वो जुलाई में आता था. And for admissions to start in July, the NEET exam used to be conducted on the first Sunday of May. So first Sunday of May में एग्ज़ाम कंडक्ट होता था, उसके बाद 1 महीने बाद रिजल्ट रिलीज़ होते थे, और उसके बाद another month और 1.5 of काउंसलिंग प्रोसेस एट्सेट्रा. फिर न्यू बैच का एडमिशन होता था जुलाई में, और बाय दैट टाइम द न्यू बैच यूज्ड टू बी एडमिटेड. बाय दैट टाइम द MBBS का पहला वाला, उनके पहले वाला जो बैच है, दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर कोर्स एंड दे वर मूविंग इनटू द सेकेंड ईयर. सो इस तरह से कोई ओवरलैप नहीं रहता था, एंड दिस इज़ द वे इट शुड बी, बिकॉज ऑफकोर्स वी डोंट हैव अनलिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस टू अकोमोडेट एन एक्स्ट्रा बैच, करेक्ट? So now considering this, in view of this same pattern that I have just discussed with you in the previous slide, it can be suggested that the undergraduate NEET counseling might end by the first week of November. So if MCC, मतलब जो NTA है, it takes about 2 months to conduct the counseling, it is likely that the examination will be conducted about 3 to 4 months before that. ये सब maths है. Now I know this, ये जो लिखा हुआ है, it might be a bit complicated to sound and all that, but मैं अभी आपको ये चीज़ थोड़ा clarify कर देती हूँ. So before I clarify, I want you to compare 2 slides. पहले वाला जो स्लाइड था आपने देख लिया होगा जो नॉर्मल है. Now I want you to put that in your heads and compare it with the new schedule, which is in accordance with the COVID का जो प्रॉब्लम हुआ है हमारे लाइफ में, उसके साथ एडजस्ट करके जो नया शेड्यूल वी आर प्रिज्यूमिंग, I want you to compare it with that. So according to the NTA schedule which was released for the first years, the current first year curriculum will end on December 15th, 2023.
तो इसका मतलब कि new batch admission will be somewhere around November, because as I again told you, we cannot have two batches of the same year because colleges don't have so much space, area, infrastructure and all that. So अगर November में नया batch का admission रहता है, then we can assume that उससे around 4 months prior, maybe June, July में we can have the exam. Now you must be thinking कि पहले वाले में I had said कि May में exam होता था और batch का admission July में होता था, बस 2 महीने का difference है. So why am I saying here कि इधर there will be a bigger gap in the sense कि maybe June में हुआ और November में admission हुआ, which would be a gap of around 6 months. So now you have to understand one thing is that NTA will try to bring forward the exams. मतलब कोविड के कारण जो disruption हुआ है हमारे schedule में, NTA is going to try to correct that as much as possible. So they are trying their level best to bring it back to the normal schedule, लेकिन अभी तक completely normal नहीं हो पा रहा है. इसलिए instead of following the normal 2-month gap between batch admission and exam, they have increased the gap. मतलब थोड़ा और भी पहले exam conduct करना चाहेंगे. But instead of May, it will just be a little behind, like a month or 1.5 months behind, which will be June to July. Now I want you to understand कि ये जो है, there's a question mark on this slide, and the reason for that is these things have not been confirmed. These are speculations which we are drawing from previous trends as well as other experts also discussing this. And ये सब कुछ जो मैंने आपके साथ अभी discuss किया, all of it is based on one and only thing which is mentioned on the top of the slide कि NTA ने एक नया academic calendar release किया है, in which it is written that current first year का session ख़त्म होने वाला है 15 December 2023. So इस date से हम back calculation करके ये सब निकाल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई official notice नहीं आया है. But you don't have to be so anxious because official notice आने का time almost हो ही गया है. It's today is the 15th of December 2022. And since it's the mid of December, we can expect NTA, the official site of NTA, to release the NEET 2023 details, and registration portal should be open very soon in December itself. So I would recommend all of you to keep checking this site which I have mentioned on this slide here, https://neet.nta.nic.in, और मैंने उनके होम पेज का एक स्क्रीनशॉट भी साथ ही साथ अटैच करके दिया है, so that you don't get confused कौन सा रियल साइट है और कौन सा फेक है. So ये है NTA का ऑफिशियल साइट जिधर पे NEET related सब कुछ रिलीज होता है, including the date, the schedule and all other FAQs, and even the registration which you have to do for NEET will be from here. So since it's already middle of December, past the middle of December, it's high time that you start checking this on a regular basis, and not on a regular basis, on every alternate day. And जो भी नया notification आता है, जो भी नया news आता है regarding your NEET 2023, it will be authentic, real and official. So please keep checking this site. So thank you students. आज के लिए मेरा गोल यही था कि आपको ये notification आप तक पहुँचाया जाए. I hope you found it useful, and continue your studying, continue solving your MCQs, and don't let your aspirations for NEET die. Good luck, happy studying.